Good afternoon, everybody. Today is not just another Saturday, but today is the day where dreams meet direction, where aspirants find their way to success. जरा सोचिए, एक बच्चा जिसके अंदर हजारों सपने हैं, कुछ कर गुजरने की आशा है, उम्मीदें हैं। आई नो आप सभी भी आज इसी आशा को लेकर यहाँ मौजूद हैं। That is why this seminar is your opportunity to turn your dreams into reality. Hello everyone, my name is Nikki Kolita. Today I am not standing here as your anchor, but I am also a teacher. I am a teacher in Don Bosco School, Panvazar. और मेरा मानना है कि एक टीचर के अच्छे गाइडेंस, अच्छे मार्गदर्शन से एक स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बदल सकती है. So welcome you all to the Northeast biggest civil service seminar powered by CSAP IAS Academy. Civil Services Achievers Point is a premier coaching institute based in Guwahati, Northeast India, which provides intensive coaching programs for competitive examination conducted under UPSC, APSC, Staff Selection Commission, banking exams and other state level examinations. It is one of the most trusted institute in the state of Assam with 6 centers in Assam established in the last 6 years time duration. CSAP का मकसद एक अच्छा माहौल बनाना और सभी एस्पिरेंट को एक ऐसी जगह पर सारी सुविधाएं देना है ताकि वे सिविल सेवा में जाने के अपने सपने को पूरा कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके. CSAP का तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस शानदार अवसर दिया और एक मंच दिया कि मैं इस कार्यक्रम की मेज़बानी कर सकूँ. यह अनुभव मेरे लिए बेहद खास और यादगार होगा. आपके विश्वास और सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ. Ladies and gentlemen, and of course, the future leaders of India, today this hall is filled with ambition, determination and dreams that has no limits. Trust me students, what you will hear today could change your life forever. अब हम आज के सबसे महत्वपूर्ण सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हमारे सारे रिसोर्स पर्सन्स हमें मार्गदर्शन देंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे. I respectfully invite on stage Mr. Anil Swarup sir, former IAS Officer, former Coal and Education Secretary, Government of India on stage, and Mr. Rajdeep Lekharu, Director, Founder and Chief Mentor of Civil Service Specialist तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे
देखो राम बीने गोती नूर है मौला मेरी मौसारा नहीं ला दुनिया परिस्थिति। अब हम बढ़ते हैं उस विशेष क्षण की ओर जब हम अपने मुख्य अतिथि एवं सम्मानीय व्यक्तित्व का आभार व्यक्त करेंगे उनके अनुभव, मार्गदर्शन और प्रेरणादायक उपस्थिति के लिए। हमारी टीम से दरख्वास्त करूंगी कि उन्हें हमारे अहोमिया गामुसा से सम्मानित किया जाए। Mr. Rajdeep Lekharu, a resident of Guwahati, Assam, is an alumni of Cotton College and Assam Engineering College and IIM Kashipur, and has served as an electronics and telecommunication engineer in various MNCs like CenturyLink, Tata Teleservices. He has a huge experience in the field of teaching for civil service exams conducted under UPSC and APSC in the last 10 years, not only in Assam but also in Delhi. He is the founder, director and chief mentor of Civil Services Achievers Point, CSAP, a premier coaching institute for civil services exams and various other competitive exams. CSAP received the Best Eminent Coaching Institution Award in 2024, reflecting its impact on civil services aspirants in the region. कोविड के समय उनका शुरू किया हुआ ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन CSAP युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। इस ऐप ने न सिर्फ एप्लीकेंट्स को पढ़ाई के लिए ज़रूरी सामग्री और मार्गदर्शन दिया, बल्कि उन्हें लगातार मोटिवेटेड भी रखा ताकि वे अपनी तैयारी पूरी लगन के साथ कर सकें। उनके सही मार्गदर्शन और सहयोग से 500 से अधिक स्टूडेंट्स अलग अलग प्रतियोगिताओं में परीक्षाओं में सफल हुए। आज हम गर्व के साथ सिविल सर्विस के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। उन्हें कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जैसे रिकॉग्नाइज्ड एज एन असम राइजिंग यूथ एंटरप्रेन्योर अंडर असम राइजिंग अवार्ड ईयर 2023-24, हाहोखी बोता 2023, रिकॉग्नाइज्ड एज एजुकेशनलिस्ट ऑफ द ईयर 2022 बाय न्यूज़ 18 Assam and Arohan Utkarsh Award 2023. So now I would like to call on stage Mr. Rajdeep Lekharu to say a few words to the students. A warm good evening to everyone present today for this auspicious occasion where, as you all know, we have amidst us Shri Anil Swarup sir, who has traveled from New Delhi, India. We are delighted to have him. We are very, very grateful from the forest part of my heart, from the institutes, on behalf of the entire institute. I welcome Shri Anil Swarup sir today to Guwahati to attend our students for the preparation strategies for different exams conducted under especially Union Public Service Commission and Assam Public Service Commission. I welcome you sir once again to Guwahati and for the seminar. On behalf of CSAP IAS Academy, I also welcome to the esteemed professors from different colleges and universities across Assam. Along with that, the union body leader members of different colleges and my dear students. I welcome you all to today's seminar. As we all know, that CSAP IAS Academy has been providing guidance and the direction to the youths
of the state and also to the other states of northeastern part of our country overall. We have a tremendous amount of experience in the last 10 years of our journey. I want to thank to each one of you for coming here today, showing the trust and the interest that you all have shown to CSAP as an institute in the last 8 to 10 years of our time period. But as we know that if we go back to the time of Mahabharata, where we see God Krishna guiding Arjuna during the war regarding the strategies basically, we have been trying to guide the students, the youths, by creating an ecosystem across the state. Along with that, helping them out to get the exposure and the experience of what is required or what is the demand from the youth or the students for the preparation of this kind of different competitive exams. But as you see, that even though God Krishna was guiding Arjuna, or with the strategies that he was trying to guide Arjuna during the war of Mahabharata, the entire effort, the entire implementation, the execution of the planning had to be done by Arjuna himself. Even though he had the presence of God Krishna, he was focused in implementing and executing the strategies. So something if we take from the situation of Mahabharata, it is very, very evident that no matter whosoever guides you, whosoever provides you with the foolproof strategies, it is you who has to thoroughly execute with your determination, with your hard work, with your smart work, with a minimum level of consistency throughout your journey of preparation for civil services. Apart from that, CSAP IAS Academy has been there for the students and the youths across the state throughout their time period, and you know that we are not that commercialized institute. We have been there for each and every student whosoever comes from any part of the state or from any community or from any economically weaker section of the society. CSAP IAS Academy has always been there standing tall for the empowerment of the youths, because we believe that if we can empower the youths of our society, so many students have cracked the prestigious civil services examination, not only in Assam, but also across the nation. He has been guiding so many youths for UPSC in Delhi, in Kerala, and many other states, including Assam. And Sir has been acting as an advisor, a constant advisor for our institute, providing us guidance, providing us his dedication and his valuable time. So I welcome once again Sir, and I would like to request him to deliver his session, and I'm very sure that after the session is completed, you all will be enlightened towards this journey of civil services as a career option. Thank you so much. Thank you, sir. सर का एक एग्जाम्पल मुझे काफ़ी अच्छा लगा. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ. भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद स्वयं करते हैं. पहले हमें खुद की मदद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम दूसरों की मदद कर पाएंगे. थैंक यू सो मच सर. Before going further, I would like to call on stage Mr. Namita Das, Coordinator IQAC, Pratyutish College, for felicitation. मैं हमारी टीम से दरख्वास्त करूँगी कि उन्हें फुलान का मुसला से सम्मानित किया जाए. अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर गार्गी शर्मा, कोऑर्डिनेटर Career Guidance and Placement Cell, Pratyutish College.
Now, Dr. Gangotri Bhuya, Faculty of Anthropology Department, Prachuryas College. आप तीनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज भी देश भर में सेमिनार, राइटिंग और पब्लिक इंटरेक्शन के माध्यम से सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को, देश के यूथ को आप प्रेरित कर रहे हैं। एक उद्देश्यपूर्ण सोच, ईमानदारी और समर्पण के साथ आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया है। वास्तव में श्री अनिल स्वरूप जी का जीवन और कार्य ही अपने आप में ही एक मोटिवेशन है, जो हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो देश की सेवा का सपना देखता है। सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप यहाँ पधारे हैं, आप इतने बिजी शेड्यूल से। आपका मंच पर आभार प्रकट करती हूँ कि आइए और हमारे बच्चों को दो शब्द कहिए। Will be interested in becoming civil servants, and I'm so glad it is so, because my experience and researchers have proved that girls make better administrators than men. So I'm so glad that all of you are here, and what I will do during the course of next 15, 20, 30 minutes is to share my experience on why I became a civil servant, how I became a civil servant, and what did I do as a civil servant. To begin with, I must tell you कि मैं IAS ऑफिसर इसलिए बना क्योंकि मेरे पिता, मेरे वालिद, वो चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। मुझे याद है कि when I was about 12 years of age, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ गया था, तो मैंने एक कागज देखा जिसपे मेरे फादर ने लिखा था कि मैं IAS ऑफिसर कैसे बनूंगा, यानी कि मैं क्लास 12 में क्या लूंगा, BA में क्या लूंगा, MA में क्या लूंगा, पूरा डिटेल था। तब मुझे पता नहीं था, I did not know what IAS was, what civil service was. But then I gradually attempted to understand कि ये क्या भला है सिविल सर्विस, क्या भला है, और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इससे बढ़िया चीज तो हो ही नहीं सकती। फिर मैं लग गया। अब मैंने क्या किया ये मैं बाद में बताऊंगा, और इसलिए बाद में बताऊंगा कि आप उसको ठीक से समझ लें कि if you want to become a civil servant, then you have to follow a certain protocol, certain discipline. And since you are all youngsters sitting here, you can do that. But I must tell you that after 38 years as a civil servant, I write in my book, not just a civil servant, that if I were to be born again, I'd like to be an IAS officer all over. So that's why I'm glad that you want to become a civil servant, because I must confess and tell you that there is no better service anywhere in the world to serve the people as compared to becoming a civil servant. Because you come across so many people, आप कितने लोगों का दुख दर्द दूर कर लेंगे, और उससे जो आपको सुकून, चैन, शांति और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैं समझता हूँ आप जितना पैसा कमा लें उससे नहीं मिलेगा. And that is the reason I want to become an IAS officer all over, because the amount and the sense of satisfaction that I derived as a civil servant, I can't visualize. No, I can tell stories after stories for next 24 hours to illustrate the point that I am trying to make as to why I would like to become a civil servant. They are all outlined in the 4 books that I have written. 5th book is scheduled to be released on 12th of August. They are actually outlining the reason why I wanted to become an IAS officer. They outline the reason why I want to become an IAS officer all over again if I were to born again. So my friends, if you have decided to become a civil servant, you have taken the right decision. But one thing I will start with by saying, you should clear doubts in your mind कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं. अगर ये डिसीजन आपने नहीं लिया तो आगे नहीं बढ़ेंगे. अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है कि मैं बनूं ना बनूं, बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, तब जरा थोड़ी चिंता करो. पहला रोड ब्लॉक ये है कि आपको स्वयं क्लियरिटी होनी चाहिए अपने दिमाग में कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं. ये चीज खाली सिविल सर्वेंट के लिए नहीं है. देखिए, जब आपकी उम्र में मैं था तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं. ये स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल टू रिमेन कंफ्यूज, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ. So my young friends who are sitting here, if you are clear in your mind that you want to become a civil servant, then I'll tell you how to become a civil servant. Are you okay, all of you? You all want to become civil servants? Excellent. Now listen to what I'm going to tell you carefully.
if you follow what I tell you, the chances are that either you will become a successful civil servant, or if you don't become a civil servant, you will succeed in life. So what I am going to tell you is not merely in terms of becoming a successful civil servant, but becoming a successful person in life. First and the foremost. And it's a difficult one, especially in the days of social media. You have to discipline yourself. So what is this discipline? You know, जब मैं लोगों से, बच्चों से बात करता हूँ, बड़ों से भी बात करता हूँ, हर जना कहता है सर समय नहीं मिलता। होता है आपके साथ? टाइम नहीं। आपके साथ होता नहीं होता टाइम? टाइम की कमी महसूस होती है। अब मुझे नहीं समझ में आता क्यों होती है। टाइम की कमी इसलिए होती है क्योंकि जो समय आपके पास 24 घंटा है, 24 आवर्स, आप ये देखते भी नहीं है कि आप उस 24 घंटों को बिता कैसे रहे। कभी किसी ने अपना शेड्यूल बनाया है कि हम इतने बजे सोते हैं, इतने बजे उठते हैं, इतने बजे स्कूल जाते हैं, इसके बजे कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, फिर क्या करते हैं? शेड्यूल नहीं बनाते। क्योंकि आप शेड्यूल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप समय वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा टाइम आप किस चीज में वेस्ट करते हैं? हमारे टाइम पे नहीं था। हमारे टाइम पे दूसरे तरीके से टाइम वेस्ट करने को, उससे बताने से लाभ नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ये है, और ये इसलिए है कि ये मालूम नहीं अंग्रेज क्या छोड़ गए वेस्टर्न वर्ल्ड, हर दिन कोई ना तो कोई दिन होता है। फ्रेंड्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे, वो डे, और जब तक इसमें कर नहीं देते तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती होता है। कि अगर इसे खोल के नहीं देखा तो ऐसा लगता है कि दुनिया चलना ना बंद कर दो, रुक जाएगी दुनिया अगर मैं नहीं देखूंगा। तो यू हैव दिस फीलिंग दैट यू विल बी लेफ्ट आउट ऑफ द मूविंग वर्ल्ड इफ यू डोंट सी दिस। और आपको आपके पैदा होने से पहले 20वीं शताब्दी में बिना इसके काम चल रहा था। दुनिया भी चलती थी, हम भी चलते, सब चलते थे। लेकिन अब ये आपको, लेकिन ये बड़ा उपयोगी चीज है। इट्स वेरी यूजफुल, आई टेल यू वेयर यू कैन यूज इट। बट फर्स्ट थिंग, आई नो आई एम आस्किंग यू फॉर टू मच। फर्स्ट सैक्रिफाइस दैट यू हैव टू मेक टू बिकम डिसिप्लिन इज कीप दिस विद यू फॉर ओनली 2 आवर्स। आप बहुत गंभीर हो जाएंगे, आप सब कुछ छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, और अनिल स्वरूप साहब आके दिल्ली से आपको बता रहे हैं इसको छोड़ दें। कठिन, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा भी कठिन। हजारों लाखों लोग बैठते हैं और कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप उन कुछ लोगों में रहना चाहते हैं तो सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी। अगर सैक्रिफाइस आपके लिए तैयार नहीं है तो आपको कठिनाई होगी। अगर आप जीनियस से तो आ जाएंगे आप सिविल सर्विस में, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग सब सामान्य मेरी तरह लोग हैं जिनको बड़ा कॉन्शियसली सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप तैयार हैं इसमें? बड़ा हल्का सा ये सवाल। देखिए, कम से कम अभी जोर दिखा दिए, कमरे के बाहर जाके चाहे खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपने इस बात पे चिंतन नहीं किया, इफ यू नॉट गिवन इट अ थॉट, देन देयर विल बी ट्रबल, बिकॉज देयर विल बी मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ। देखिए, एक डिस्ट्रैक्शन वो चल रहा है, वहाँ पे चर्चा चल रही है, मैं यहाँ व्याख्यान दे रहा हूँ, वहाँ वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। कई लोग आसपास के लोग सोच रहे होंगे हम ये स्टीरियोफोनिक आवाज कैसे सुन रहे हैं, कि इधर से सर बोल रहे हैं, उधर से भी आएंगे। लेकिन आपको जीवन में ऐसे स्टीरियोफोनिक आवाज आती रहेगी, बहुत डिस्टर्बेंस आएंगे आपके। आपको फोकस होना है, ये सेकंड पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। आपको फोकस होना पड़ेगा कि मैं यही करूंगी। फोकस कैसे होगा? आप जीवन में आज के बाद से जो काम करें, अपने से प्रश्न करें कि इस काम को करने में आप सिविल सेवक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिविल सेवक परीक्षा की तैयारी केवल पुस्तकों से नहीं है। आप सोचते होंगे किताब से ही मिल जाए, पढ़ के हम लिख देंगे ना। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, यू आर ऑल यंगस्टर्स एंड आई एम अज्यूमिंग यू वुड बी इन क्लास 12, बीए में होंगे, है ना? ऐसे ही है। ये सही टाइम है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप तैयारी के लिए तैयारी कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रिपेयर टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस। You don't have to get down to preparing for civil service, because if you prepare to prepare for civil service, then the chances are that you will qualify. Then the journey will become that much easier. No coaching institute tells you to prepare. वो आपको किताब निकाल देंगे, किताब से पढ़ाएंगे, कहेंगे प्रश्न का उत्तर लिखो। मैं आपको आज दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। How do you prepare for civil service? And all of you that who are sitting here, except those in the first row, are, I mean, even the first row are youngsters, but others, you are now in a position that you can prepare to prepare.
व्हाट इज द प्रिपरेशन टू प्रिपरेशन? पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, डिसिप्लिन। दूसरा, आप अपने दिन का शेड्यूल बनाइए। कैसे बनाइएगा? पहले ये कीजिए कि आप वर्तमान में, यानी राइट नाउ व्हाट डू यू डू, व्हाट टाइम डू यू वेक अप, व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई लोग को 1 कप चाय की जरूरत होती है, कई लोग बिना चाय की व्यवस्था हो जाती है, कई लोग 2 कप चाय की जरूरत होती है, कई लोगों को अखबार की जरूरत होती है, उसके बाद जाते हैं अंदर, है ना। और अंदर भी अलग अलग समय लोग व्यतीत करते हैं, काम वही है लेकिन समय अलग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रात को क्या खाया, क्या पिया, कब सोए, उस पर निर्भर करता है कि सुबह कितना टाइम लगेगा। देखिए ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। वरना मैं आपको इसलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे आज तक कभी भी समय की कमी नहीं महसूस हुई। मैं सचिव रहा हूँ भारत सरकार का 4 साल, एंड आई वॉज नेवर शॉर्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आई वॉज क्लियर इन माई माइंड हाउ एम आई गोइंग टू स्पेंड माई टाइम, वेरी क्लियर। आपको भी ये समझना पड़ेगा कि इफ यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ। एंड ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि आप दिन भर लिखिए। सोचिए, जब आप अपने घर से कॉलेज जाती हैं तो क्या करती हैं उस समय? क्या करती हैं? आप कैसे जाती हैं बेटा? हाउ डू यू ट्रेवल टू योर कॉलेज? आपसे पूछेंगे, आपके पीछे आप कैसे जाती हैं कॉलेज? जाती हैं आप? कैसे जाती हैं? साइकिल से जाती हैं, रिक्शे से जाती हैं? रिक्शे से जाती है ना, तो कितना टाइम लगता है आपको? 10 मिनट्स लगता है सर, तो कम है। लेकिन कई बार जैसे ज़्यादा लग रहा, आधा घंटा, पौन घंटा, तो उस आधे पौन घंटे में या 10 मिनट में आप क्या करती हैं? इधर उधर देखना, क्या हो रहा है, दुनिया किधर जा रही है, कैसी जा रही है। आपको अपना हर मिनट का उपयोग करना है। कैसे करना है? आप अगर रिक्शे में जा रही है तो कोई ना कोई आपकी फ्रेंड आपके साथ जा रही होगी। उस 10 मिनट में आप फिल्मों की बात करती हैं, हीरोज की बात करती हैं, इंडो पाकिस्तान वॉर की बात करती हैं, क्या बात करती हैं? ये बात बहुत निर्भर करता है कि आप हर पल कैसे उपयोग कर रहे हैं। हाउ आर यू स्पेंडिंग ईच मोमेंट। अब लेट अस सी कि आप आगे तैयारी कैसे करें। अपना शेड्यूल तो आपने बना लिया और आप थोड़े डिसिप्लिन भी हो गए। देखिए, सिविल सेवा में आने के लिए 4 चीजें, 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 इज नॉलेज, वो हर जना जानता है। ज्ञान के बिना तो आगे बढ़ेगी नहीं गाड़ी, ज्ञान तो आपको अर्जित करना ही है। यू हैव टू एक्वायर नॉलेज। इस पे भी मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि किस प्रकार का ज्ञान आप अभी अर्जित करें, यानी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टडी दैट यू शुड डू नाउ। डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम नाउ, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। दैट इज फर्स्ट इज नॉलेज। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? समझ। आपको मालूम नहीं, महसूस हुआ नहीं हुआ कि अगर एक कोई कागज में पढ़ने को दे दूं सबको, एक व्यक्ति एक ही बार पढ़ के समझ जाएगा, दूसरी व्यक्ति में 2 बार पढ़ेगा, तीसरी व्यक्ति 3 बार। चीज वही है, कागज वही है, लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी समझ कैसी है। क्या आप जल्दी चीज को समझ लेते हैं या आपको समय लगता है समझने में? यानी कि कार्य वही है लेकिन समय अलग अलग लगता है। आप अपनी समझ कैसे सुधारें? अब कोई कहेगा साहब इससे सिविल सर्विस से क्या मतलब, तो आंसर लिखना है। अगर आपकी समझ ठीक नहीं होगी तो वही तैयारी आप दुगने टाइम में करेंगे, तिगने टाइम में करेंगे। और समझ आपने सुधार ली, ये मैं बताऊंगा कैसे सुधारें समझ, तो आप वही काम जल्दी कर लीजिएगा। जैसे जो भी चीज मैं अभी बोल रहा हूं, आप में से हर व्यक्ति अलग अलग समझ रहा होगा। अगर राजदीप आपका सर्वे करें और बाहर निकले और आप सबसे पूछें कि अनिल स्वरूप सर ने क्या कहा, तो हर जना अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करेगा। वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी समझ कैसी है। इफ यू हैव द राइट ग्रास्प, if you have the right comprehension, you will understand what I am saying and you will be able to do that. पहला ये कैसे करेंगे भी बताता। दूसरा है एनालिटिकल स्किल्स, एनालिसिस, विश्लेषण। यानी कि आपको इशू तो मिल गया लेकिन आप उसको एनालाइज नहीं कर पाते। तो आपको फैक्ट अगर आपने रट लिया तो बोल दीजिएगा, लेकिन आज की तारीख में मान लीजिए कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप पर अगर मैं आपसे बोलने लगता हूं, आपके पास फैक्ट्स चाहे जितने हो लेकिन आपके पास एनालिटिकल स्किल्स नहीं होगी तो आप ना लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे। सो यू हैव टू डेवलप दिस एनालिटिकल स्किल्स। सो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स, एंड फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने पढ़ लिया, आपके दिमाग में बैठ गया,
आपने उसको समझ भी लिया, आपने विश्लेषण भी कर लिया, लेकिन नंबर तो आपको उस पर मिलेंगे जो आप लिखेंगे या इंटरव्यू में जो बोलेंगे। वी डोंट इवन टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। हम क्या करते हैं? आंसर राइटिंग। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आंसर कैसे लिखें? तो मैं उनसे प्रश्न करता हूं, लिखना आता है तुम्हें? अब वो ये चीज नहीं समझ पाते कि अगर लिखना ही नहीं आता तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? रट के लिखेंगे? रट के नहीं लिख सकते आप। तो नॉलेज अगर आपने यहां रखी है और आपकी आदत हो गई अपने विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि यू आर एबल टू फ्लुएंटली एक्सप्रेस व्हाट यू से, देन द जॉब इज डन। फिर करना क्या आपको? फिर तो आप आंसर भी लिख लेंगे, लेकिन आप सीधे आंसर लिखने पे आ जाएंगे तो वो जो फ्लुएंसी आपकी आनी चाहिए, जिस धारा प्रवाह से आप अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। ये मैं इतनी बड़ी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूं। तो अगर आज की तारीख में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो परेशान बिल्कुल मत होइए। जब मैंने क्लास 12 किया था, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, जब मैंने क्लास 12 किया था तो मेरे पास उस समय साइंस के सब्जेक्ट से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर्मूला सुना है? गणित के लोग यहाँ बैठे हुए, कोई नहीं है यहाँ पे मैथ्स का, सुना है ना? तो उसके आगे कोई लैंग्वेज पे इंप्रूवमेंट नहीं होता। हम साइंस में लगे रहते हैं, टाइम नहीं मिलता। तो जब मैंने बीए ज्वाइन किया, क्लास 12 के बाद बीए ज्वाइन किया, तो मैं 5 सेंटेंसेस ना तो अंग्रेजी के लिख पाता था ठीक से, ना हिंदी के लिख पाता। आई कुडंट राइट, लिख ही नहीं पाता था। तो मैंने क्या किया? मैंने वो किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसको ध्यान से सुनिएगा कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधारें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नॉलेज से। पहली चीज हमने कही थी नॉलेज, दूसरा कहा था कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा कहा था एनालिटिकल स्किल्स, और चौथा कहा था कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इन चारों को कैसे सुधारें ये मैं आपको बताता हूं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे सुधार आएगा। मैं इसलिए धीरे धीरे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मत समझिएगा कि आज अनिल स्वरूप साहब ने व्याख्यान दिया और कल सुबह से आप तैयार हो गए सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। ऐसे नहीं होता, समय लगता है। मैंने आपको बताया, मैंने 1974 में क्लास 12 किया था। मैं पहला एग्जाम 1979 में मैंने दिया, 5 साल। उन 5 सालों में मैंने वो सब किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और मुझे लाभ हुआ उसका। पहली चीज ज्ञान का अर्जन। आज की तारीख में मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि आप में से अभी क्लास 12 या BA 1 में, इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? क्लास 12 पास किया है या है, या BA में एस्पिरेंट्स भी हैं, उनके लिए भी है कि आप नॉलेज आज की तारीख में कैसे स्टार्ट करेंगे। नॉलेज का जो आधार है, द बेसिस इज जिज्ञासा, इंक्विजिटिव, यानी कि आपको चाह है जानकारी प्राप्त करने की। अदरवाइज आप पढ़ेंगे तो आपको बर्डन लगेगा, लेकिन अगर आप इंक्विजिटिव हैं, आप जानकारी चाह रहे हैं, तो आपको मजा आएगा उसमें। आप अंतर समझ रहे हैं दोनों में? If you treat this preparation for civil service as a burden, then you will be in trouble. You won't qualify. You have to enjoy this journey every moment, and enjoyment will come if you have that desire in you to acquire more knowledge. Akhbar is extremely critical for you. And newspaper के 3 पेजेस, पहला पन्ना बिल्कुल मत पढ़िए। किसने किसको मार भगाया, किसने किसको गिरा दिया, किसने किसको फटका, कौन सी पॉलिटिकल ने किसको खींचा, ये सब बेकार। पहला है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज वो होता है जिसमें समाचार पत्र का एडिटोरियल होता है। दूसरा पेज जो अर्थशास्त्र से, यानी कि इकोनॉमी, वो पढ़िए। और तीसरा इंटरनेशनल पेज। ये 3 पृष्ठ सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए, और जो पढ़िए उसकी चर्चा कीजिए लोगों से, सो आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने का एडवांटेज क्या होता है कि कहीं कोई चर्चा हो रही है, देयर इज अ डिस्कशन, यू आर एबल टू रिलेट टू व्हाट यू रेड। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब मैं पढ़ता हूं और भूल जाता हूं, होता याद नहीं रहता, होता ना। अब फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, ये सब फॉर्मूले मैंने अपने ऊपर अपनाए हुए, तभी आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला ये है कि हम लोग जब पढ़ते हैं उस समय कागज तो आगे होता है, ध्यान कहीं और होता है, होता है आपके साथ कि पढ़ रहे हैं कुछ और दिमाग कहीं और है। तो अगर फोकस नहीं होगा जो आप पढ़ रहे हैं तो कभी याद नहीं कराएगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे। तो पहला इसका फॉर्मूला ये है कि टोटल फोकस होकर पढ़िए। फोकस का तात्पर्य है
कि जो आसपास डिस्टर्बेंस है उसको हटा दीजिए। अगर इधर कोई गाना बज रहा है तेजी से तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप आ रहे हैं, कोई आपका रिलेटिव अंदर चला आ रहा है, कोई भाग रहा है इधर, तब आप फोकस होकर नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहला फॉर्मूला याद करने का है फोकस, एब्सोल्युटली देयर। ये मेरे साथ भी होता था कि किताब सामने, दिमाग कहीं और है। एक अच्छा क्रिकेट मैच चल रहा है तो दिमाग वहां पर है, पढ़ रहे हैं, फोकस होना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करें, पढ़ लिया, फोकस होकर पढ़ लिया, लेकिन समझ में नहीं आया। अब समझ में नहीं आया तो फिर आपको या तो रट्टा लगाना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा। देखिए, चांसेस हैं कि अगर आपने उससे फोकस वे में पढ़ा और उसको समझा तो चांसेस हैं कि आप उसको याद कर लेंगे। तीसरा, एक तो ध्यान से पढ़िए, समझिए। तीसरा, ये कोई नहीं करता और इसको भी आप करने का प्रयास कीजिए। जब आप पढ़ लीजिए, जब आप समझ लीजिए, उस कागज को नीचे रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके उसी समय रिवाइज कीजिए। आप में से कोई करता है? आई एम ग्लैड सम ऑफ यू से यस। जो नहीं करते, मैं उनको फिर बता रहा हूं कि ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और फिर उसको उसी समय रिवाइज कीजिए। आंख बंद कर लीजिए 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितनी। उससे बेहतर रिवीजन कोई नहीं होता। और चौथा पॉइंट उससे भी महत्वपूर्ण है, वो जो विषय है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, उसको किसी के साथ डिस्कस कर लीजिए। वो जो आप 10 मिनट के लिए अपने घर से स्कूल जाती हैं या आपकी फ्रेंड आपके साथ जा रही है, उससे कहो आज मैंने ये पढ़ा, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी। आप मजा देखिए इसका, आपको याद होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि सब चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन आप याद ज्यादा होगा आपको। इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू रीड, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड, इफ यू रिवाइज व्हाट यू रीड एंड इफ यू डिस्कस व्हाट यू रीड, ये 4 पॉइंट फॉर्मूला है याद रखने का। एक और तरीका है याद रखने का, आप जो चीज नहीं आती उसको उस चीज से जोड़िए जो आती है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग इज फ्रॉम अननोन टू नोन। यानी कि जो आपको जा रहे हैं, जो आपको पता है, जैसे आपको कोई ईयर याद करना है या किसी का नाम याद करना है या कोई टर्म याद करना है, उसको किसी ऐसे नाम से, ऐसे टर्म से जोड़िए जो आपको आता है। मैं आपको उदाहरण दूं, आज की तारीख में, इस बुढ़ापे में भी मेरा ज्ञान की अभी मेरी जिज्ञासा रहती है, मैं अभी भी सीखना चाहता हूँ, चीजें सीख रहा हूँ। तो मैं आजकल जापानीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझ रहा हूँ। तो जापानीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और वो आप लोगों के लिए भी रेलेवेंट होगा। उसे कहते हैं वाबी साबी। वाबी साबी का तात्पर्य यह है कि आप परफेक्शन के लिए मत जाइए, क्योंकि दुनिया परफेक्ट नहीं है, दुनिया भी परफेक्ट है। और अगर आपने परफेक्शन का इंतजार किया तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, परफेक्शन ही सोचते रहेंगे। तो ये तो ठीक है अपनी जगह पर। आप वाबी साबी को याद कैसे करें? तो बड़ा टेढ़ा सा शब्द है वाबी साबी। तो मुझे एक डिश होती है मिडिल ईस्ट की, उसका नाम है वासाबी, वो बड़ी अच्छी लगती है। मैंने वाबी साबी को वासाबी से जोड़ा, अब वासाबी मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मुझे वाबी साबी याद हो गया। ये ट्रिक है। अपनी फ्रेंड का नाम ले लीजिए। मैं आपको एक और बताऊं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सोशन। सोशन क्या है? सोशन ये है कि यू शुड हैव अ चाइल्ड लाइक यर्निंग टू लर्न। जो मैंने आपसे कहा ना कि आपने जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, वो बच्चे में होती है ना, वो पूछता है ये क्यों है ऐसा। कि मेरा ग्रैंडसन है, वो इतने प्रश्न करता है मुझसे, मेरे समझ में आया कि इसमें वो जिज्ञासा है। अब सोशन को कैसे याद करूं? सोशन को याद करने के लिए मैंने सोचा ये बच्चे जैसी जिज्ञासा है। बच्चे को हिंदी में शिशु कहते हैं। शिशु से मैंने पकड़ा सोशन और मुझे सोशन याद है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे याद करने की शक्ति कम हो जाती है। तो हमें तो इन फॉर्मूलों को बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप जब नॉलेज गेन कर रहे होंगे उस समय आपको ये महसूस होगा, यू विल फील कि हम पढ़ रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो इससे घबराइए नहीं, इट इज वेरी नेचुरल। सबके साथ होता है, आप भी भूलते हैं, वो भी भूलता है, तो कोई अनयूजुअल बात नहीं है। लेकिन आप अगर याद करना चाहते हैं तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको देकर जा रहा हूं, उसको अपना के देखिएगा। जो भी मैं बात कह रहा हूं मेरे YouTube चैनल पे है, तो आप कभी हो तो मेरा नाम टाइप कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस है वीडियो, उसमें सब बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं हैं, तो आपको समझ में आ जाएंगी। ये तो हो गया नॉलेज की बात। अब आइए कॉम्प्रीहेंशन कैसे सुधारें। ये कोई बात सामान्य रूप से नहीं करता। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है समझ।
कि वही चीज आप जल्दी समझ लीजिए। देखिए कॉम्प्रिहेंशन का एक मेजर कंपोनेंट क्या है, वोकैबुलरी, शब्दकोश। आप लोगों के साथ होता नहीं होता, मेरे साथ बहुत होता था कि मुझे पता है कि मैं मस्तिष्क में भाव क्या आ रहा है, लेकिन उसका शब्द नहीं मिल रहा। अब देखिए मैडम इतना धारा प्रवाह से बोल रही थी, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इनसे। इनकी उम्र में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत धड़ाधड़ बोल रही थी। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि मैं बोलता था, मुझे दिमाग में आइडिया होता था लेकिन शब्द नहीं मिलता था। अरे हाँ वही तो, अरे होता है आपके साथ। उसका कारण ये है कि आपकी वोकैबुलरी परिपक्व नहीं है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, आप लोग डिसीजन ले लीजिए कि आप असमीज में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, अंग्रेजी में देना चाहते हैं, हिंदी, कोई हर भाषा अच्छी है। एक बार ये निर्णय ले लिया आपने तो आपको खाना पीना उठना बैठना उसी भाषा में, फिर आप मिक्स ना कीजिए इसको, क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए शब्द चाहिए और शब्द सुधारने की आवश्यकता है। शब्द कैसे सुधारे? आप में से अंग्रेजी मीडियम के कितने लोग हाथ उठाएंगे? ओके, सो फॉर दोज इन इंग्लिश मीडियम आई हैव अ सजेशन, बाकी का उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। देयर वर 2 books that helped me improve my vocabulary and I recommend this to everyone. One book is by Wilfred Funk, which is 30 days to more powerful vocabulary, और दूसरी है नॉर्मल न्यूज की 6 weeks to words of power। ये 2 किताबें मैं आज भी कई लोगों को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि इन 2 पुस्तकों में बड़ा साइंटिफिकली बताया गया है कि अपनी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें। ऐसा नहीं कि रैंडमली शब्द उठा लिए हो, नो, इट्स वेरी साइंटिफिकली एक्सप्लेन। सो यू शुड अटेम्प्ट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। जो मैं आपसे एडिटोरियल पेज पढ़ने को कह रहा हूं, जब आप पेज पढ़ेंगे तो कई सारे शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, उनको अलग लिख लीजिए। और गूगल अंकल, यहाँ आप गूगल अंकल जानते हैं कौन? इसमें अवतरित होते हो तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी के अलावा गूगल अंकल से प्रयोग कीजिए, बड़े बढ़िया अंकल हैं। तो जो शब्द ना है उसे टाइप कर लीजिए, धड़ से आ जाएगा, और उसको लिख लीजिए। और चलते फिरते वो 10 मिनट आप जा रही हैं तो रास्ते में सोचिए, अच्छा ये शब्द मैंने सोचा था, इसका मतलब था, और अपनी फ्रेंड के साथ उसको उपयोग कर लीजिए। जो नया शब्द सीखा उसको उपयोग कर लीजिए। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप गलत उपयोग करेंगे, है ना, और बहुत बार ऐसा होगा जो जानता हुआ आप पे हंसेगा, उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज उनको हंसने दीजिए, बाद में आप हंसिएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब आप इस जर्नी पे चल रहे हैं तो गलतियां होंगी आपसे। मेरे जीवन में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने कोई गलती नहीं की। हर व्यक्ति गलती करता है, मैंने की बहुत गलती। महात्मा गांधी ने इतनी गलतियां की, किताबें लिख जाती हैं एक्सपेरिमेंट। तो गलतियां करना गुनाह नहीं है, गलती से सीखना चाहिए। तो आप पे कोई हंस रहा है उसे हंसने दीजिए, उसे घर जाने दीजिए, आप अपने रास्ते पे लगे रहिए। तो आप अगर वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे, और आप वो रेगुलर एडिटोरियल, मैं बार बार एडिटोरियल पेज पे इसलिए जा रहा हूं, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ है वो समाचार पत्र का, उसको पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए। अब तीसरा आता है एनालिटिकल स्किल्स, यानी विश्लेषण। आपके पास फैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, लेकिन आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से शुरुआत होगी, कैसे उसको हम उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, कैसे कंक्लूजन पे आएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे लेख आप पढ़ें, ऐसी पुस्तकें आप पढ़ें। यू रीड सच मटेरियल, सच बुक्स विच आर एनालिटिकल इन नेचर। ये सिखाया नहीं जा सकता, ये धीरे धीरे मस्तिष्क इम्बाइब करता है। अगर आप किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहे हैं और वो एनालिटिकल है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आज की तारीख में यूट्यूब पे भी कई डिस्कशंस इतने अच्छे होते हैं कि आप उनको ध्यान से सुनिए तो आप खुद भी एनालिटिकल होंगे। इसी तरह मेरे विचार से सबसे बढ़िया स्रोत, यानी कि द बेस्ट मटेरियल दैट इज अवेलेबल फॉर एनालिटिकल स्किल्स, एडिटोरियल आर्टिकल्स। हर न्यूज़पेपर में 2 या 3 एडिटोरियल आर्टिकल। एडिटोरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, एडिटोरियल आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। आप उसे रेगुलर पढ़ेंगे तो आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। कैसे, क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि ये जो लोग लिखते हैं एडिटोरियल आर्टिकल्स, ये पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, उनका एक्सप्रेशन अच्छा है। वो जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी विषय को प्रस्तुतिकरण उसका कैसे, हाउ डू यू प्रेजेंट अ पर्टिकुलर केस। वंस यू डेवलप दिस आर्ट, देन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस बिकम्स वेरी इजी। मैंने चूंकि ये कर लिया था, जब मैंने फाइनल तैयारी की तो मुझे फटाफट हुई तैयारी। फिर तो मुझे ज्ञान को सिर्फ लगाना था अपनी एट्रीब्यूट्स में। लेकिन यूजुअली हम ये सब तैयारी नहीं करते, सीधे किताब पे लिख जाओ और फिर शुरू हो जाओ एग्जाम के लिए। अब प्रश्न ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कैसे करें, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जब मैंने क्लास 12 किया था तो ना मैं 5 सेंटेंस अंग्रेजी के, ना हिंदी के, ना बोल पाता था कायदे से, ना लिख पाता था। तो मैंने क्या किया,
फिर जाइए एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज में एक कोई एडिटोरियल आर्टिकल ले लीजिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, उस आर्टिकल को पढ़िए, रीड दैट आर्टिकल स्लोली बट लाउडली प्रोनाउंसिंग ईच वर्ड एंड रिकॉर्ड दैट इन योर फोन। I am repeating it. It will be a very boring exercise to begin with, but whatever you are seeing, this finished product of Anil Swarup, it is on account of the exercise that I took over a period of time, where I used to read the editorial article aloud in front of a mirror. हमारे टाइम पे फोन नहीं थे तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, but I did that regularly. Regularity is the key. दवाई है ये, अगर आपने रोज नहीं किया तो नहीं होगा। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, क्योंकि शुरू में जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, लड़खड़ाएंगे, मुझे गाली देंगे, क्या समझा गए, इसे पढ़ने से क्या होगा, एग्जाम तो अलग आना है, ये जने क्या बता रहे हैं पढ़ाने को। पढ़िए, जब आप पढ़ लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए, पेपर नीचे रख दीजिए। अब उससे कठिन कार्य मैं कराने जा रहा हूँ आपसे। अपने शब्दों में उसे बोलिए आप शीशे के सामने, आप बिल्कुल पसीने छूट जाएंगे आपके, क्योंकि आधी चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, आधी चीज समझ में आएगी आपको, समझ आपने कभी बोला नहीं इसलिए बोल नहीं पाएंगे। चिंता नहीं कीजिए, लगे रहिए, आप बोलिए, चाहे 1 मिनट के लिए बोलिए जरूर, और उसको भी रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड में इसलिए कर रहा हूं कि पहली चीज आप समझ लेंगे कि कहां कमी आ रही है, गलती आ रही है, और उससे महत्वपूर्ण यह है कि ओवर अ पीरियड टाइम यू रियलाइज हाउ यू आर इंप्रूविंग ओवर पीरियड टाइम। यू कांट इमेजिन द कॉन्फिडेंस दैट यू विल हैव इफ यू अंडरटेक दिस एक्सरसाइज। यू नो फ्रेंड्स, आई एम डाइग्रेसिंग ए बिट। मैंने आपसे बताया था गलती होती है, मुझसे भी गलतियां होती थी। जब मैंने अपने आप को सुधारा, मैं डिबेटर बना अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। क्लास 12 में 5 सेंटेंस ना बोलने वाला अपनी यूनिवर्सिटी का डिबेटर बन गया। तो मैं पूरी देश में जाता था डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में। आपने IIT कानपुर का नाम सुना है? तो IIT कानपुर में एक नेशनल फेस्टिवल होता है हर साल, तो उस फेस्टिवल में डिबेट भी होती थी। तो मैं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वहाँ पहुँच गया। डिबेट से एक दिन पहले म्यूजिक कॉम्पिटिशन था, तो मैंने सोचा मैं गाना भी गा लेता हूँ। आपने से कई लोग होंगे ऐसी बाथरूम में गा ही लेते हैं। मैंने अपना नाम दे दिया बिना तैयारी के। तो करीब 1,500 बच्चे बैठे थे। आप लोग तो शांत बैठे हो, बड़े उदंडी थे। खैर एनीवे, मेरा नाम अनाउंसमेंट, सबने तालियां बजाई, तालियां तो बचा ही देते हैं लोग। मैं गाना गाने गया और गलत सुर पकड़ लिया। तो अभी बिटिया ने बड़ा अच्छा गाना गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो प्रार्थना की थी जिन्होंने। खैर मैंने तो बहुत बेसुरा गाया। मुझे जैसी मेरे 10 सेकंड में होंगे, 1,500 लोगों ने मुझे बू करके ऑडिटोरियम से बाहर निकाल दिया। ये किसी का, आप आज तो मैं हंस रहा हूँ, तो मेरी हालत सोचिए क्या होगी। मैं समझ में नहीं आ रहा था किस कुर्सी के नीचे छुप जाऊँ, कहाँ छुप जाऊँ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। कौन जाएगा अगले दिन? तो मेरे एक सीनियर थे, वो मेरे पास आए, बोले बॉस सुना आप कल डिबेट में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने कहा आपने देखा, उन्होंने बू करके मुझे भगा दिया, कल जाऊँगा तो मार डालेंगे मुझे। तो उसने कहा यार देखो, ऐसा तुमने 2 गलतियाँ की। पहली चीज़ तो तुम अपने आप को तानसेन समझते थे, बिना रियाज किए हुए गाना गाने चले गए। और दूसरा, जहाँ तुमने प्रैक्टिस की है वहाँ तुम नहीं जा रहे हो। तो ये चर्चा 1 घंटे तक उसने मुझे ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे जाना चाहिए। मैंने डिसाइड किया मैं पार्टिसिपेट करूंगा डिबेट। अगले दिन जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ, शुरू सब बोले गायक आ गया। पिछले दिन वाला सबको याद था। आई हैड ओवरकम माई फियर्स, आई वेंट एंड स्पोक फ्रेंड्स, आई वन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल डिबेटिंग कॉम्पिटिशन एंड आई हैव नॉट लुक बैक। आज की तारीख में मैं दुनिया भर में भ्रमण करता हूँ। लास्ट ईयर हार्वर्ड, बर्कले, सब जगह गया। सब बुलाते हैं मुझे बोलने के लिए, मैं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलती कर सकता हूं। मुझे ये भी पता है कि उस गलती को मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो माय फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज आई बिकेम अ डिबेटर थ्रू दिस प्रैक्टिस व्हिच आई एम टेलिंग यू, रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीकिंग आउट इन योर ओन वर्ड्स। तो 2 स्टेप हो गए। पहली चीज आप पढ़ेंगे। मेरा अनुभव ये बताता है कि 50% तो इस कमरे से बाहर निकलते ही भूल जाएंगे इस चीज को, तो क्या बकवास कर रहे थे। बाकी 50 में उसके 50% एक आध दिन पढ़ेंगे। उसके बाद कहेंगे अरे यार ये कहाँ पता दी। आई अपीयर्ड ट्वाइस इन UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ईयर आई गॉट द पुलिस सर्विस। माय मार्क्स इन इंटरव्यू वाज 54%. Second year I got the highest in the country. I got 80% marks. And second year, to 20% of the questions I said I don't know sir. It shows your integrity. जब आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अभी के लिए इतना काफी कि आप चिंता ना कीजिए क्या नहीं आता। जो आता है उसको सही प्रस्तुत कीजिए। यू गेटिंग द पॉइंट? नो वन ऑन दिस अर्थ नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, है ना? किसी को है ऐसा जो कहता है कि मुझे सब चीज का सब पता है। बहुत सारी चीजें जो नहीं पता है। तो आप ये मान के चलिए मुझे नहीं पता, सो किसी को नहीं पता, कॉन्फिडेंट रहिए।
कॉन्फिडेंस इस बात से आएगा, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिसको सब प्रश्न पता है, वो आपकी इंटीग्रिटी चेक कर रहे हैं कि आप गेस तो नहीं मार रहे हैं, नहीं आता बता दीजिए, नहीं बिल्कुल चिंता नहीं। इग्नोरेंस की चिंता ना कीजिए, इग्नोरेंस को एक्नॉलेज कीजिए। जिस दिन इग्नोरेंस को एक्नॉलेज करेंगे आप सीखते रहेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, चिंता और छुपाइए भी मत इग्नोरेंस को, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है? ओके, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। एनी अदर? सर फैमिली से फोर्स तो होता है। एक मिनट रुक जाइए, फोर्स पर रुक जाइए। फोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी चीज को अपनाया नहीं और एक्सटर्नल फोर्स से कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये फिजिक्स लॉ ऑफ मोशन नहीं है कि मोमेंट, जब तक कोई चीज बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो चलेगी नहीं। ह्यूमन बीइंग को अपनी फोर्स से चलना पड़ेगा। इंटरनल आपको अंदर, जैसे मेरे पिता ने कहा ना कि मैं सिविल सर्वेंट IAS ऑफिसर बनूंगा, जब तक मैंने उसको इंटरनलाइज कर लिया तब तक मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने खुद समझा कि मेरे लिए उपयुक्त है। मैं इसलिए नहीं बना IAS ऑफिसर, मेरे फादर चाहते थे। मैं इसलिए बना कि मेरे फादर तो चाहते ही थे, मैंने समझा कि मुझे बनना चाहिए इसे। तो जब तक आप स्वयं नहीं समझेंगे, ये आप सब समझ लीजिए, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस इज अ टफ जॉब, इट इज अ टफ जर्नी। लेकिन ये किसी दूसरे के कहने से अगर आप कर रहे हैं जर्नी, तब डाउट है। ये आपको स्वयं अच्छा लगना चाहिए, आपको स्वयं के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके स्वयं के अंदर डिजायर होनी चाहिए कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, अभी फोकस मेरे को मैंने फोर्स किया, आई वाज लाइक ठीक है मैं। देखिए रुक जाइए, मैं इनको हर बात पे इसलिए रोक रहा हूं कि ये शब्दावली परिवर्तित करनी पड़ेगी। इनका ठीक है, कह रहे हैं तो कर लेंगे। आपने क्या, आपने ठीक है शब्द कहा ना? नहीं, ठीक नहीं है, ये मेरे लिए उपयुक्त है। ठीक है तो बड़ा हल्का सा शब्द है, क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए मैं अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए मैं इसलिए आपको बार बार रोक रहा हूं, देखिए चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, शब्दों का चयन बहुत सटीक होना चाहिए। इट शुड कन्वे अ मीनिंग दैट यू वांट टू कन्वे। समटाइम्स होता है यू वांट टू कन्वे समथिंग, बोल आपने कुछ और दिया तो गड़बड़ हो जाएगा उससे। तो सर सपोज मैं अभी प्रिपेयर भी करता हूँ UPSC के लिए, तो सर आपको भी पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल, फिर एनवायरनमेंट, सोशियोलॉजी, मीन्स सर ऐसे तो एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स बहुत है, क्योंकि इंडिया पे अभी या वर्ल्ड पे भी ग्लोबल कंपटीशन, साइंटिफिक टेम्पर्स, एविडेंस के बगैर तो कुछ नहीं चलने वाला। पर सर इंडियन का जो विजडम एजुकेशन है, जो एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा है, योगा, आयुर्वेदा, उपनिषद, गीता, भगवत गीता, सर आपका इसमें क्या नॉलेज है कि इंटरनल कुछ होना चाहिए कि नहीं भी? देखिए अब हम ज्ञान की बात करने जा रहे हैं। मैं ज्ञानी पुरुष नहीं हूं, लेकिन इन्होंने ज्ञान की बात कही। आप सब बच्चे इसको भी ध्यान से सुनिए। इस उम्र में जिसमें आप हैं, उसमें बहुत ये कहने की कोशिश ना करिए कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए और ये होना चाहिए और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। मौका आएगा उसको बोलने के लिए। अभी आप अपना धरातल तो पकड़िए, पहले आप इस लायक होइए कि आपकी बात कोई सुने। आप अभी से बात करने लगे, अरे ट्रम्प साहब ने क्यों 50% की ड्यूटी लगा दी? अब हम चर्चा करेंगे अगले दिन सुबह तक, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा उसका, लेकिन चर्चा करेंगे। अरे हम लोग को यहाँ का पूर्व का ज्ञान होना चाहिए, गीता का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, कौन कह रहा है नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो आप एग्जाम दे रहे हैं, क्या आपकी और हमारी चर्चा से UPSC क्या सिलेबस चेंज कर देगा? फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? टाइम तो 24 ही घंटे है ना। जरा ध्यान से सुनिए इस चीज को। मैं भी पहले उन चीजों के लिए बड़ा परेशान रहता था जिन पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे असम में होता, यहाँ पे गुवाहाटी में ट्रैफिक जैम में फंस गया, दिल्ली में भी खूब होता था। मैं जब पहले ट्रैफिक जैम में फंसता था तो अब तो बाल मेरे बचे नहीं है, पहले नोचता था, बहुत गुस्सा हो जाता था, क्या है, क्या क्यों। एक दिन मेरी पत्नी साथ जा रही, फिर ट्रैफिक जैम में फंस गया, मैं फिर चीखने लगा, क्या है। मेरी पत्नी ने बड़े हल्के से मुझसे पूछा, तुम इनका कुछ कर सकते हो? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? बोले जब कुछ कर नहीं सकते तो खून क्यों फैला रहे हो? सोचिएगा। तो आप थोड़ी देर के लिए गीता को पढ़िए, रखिए, चर्चा कीजिए, ज्यादा प्रश्न ना कीजिए इसमें। जब आप सिविल सर्विस में आ जाएगा तो खूब समय मिलेगा आपको प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में, प्रश्न करने में। तो आप इधर उधर भटकेंगे कि भाई वो इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों है, और साहब यहाँ पे तो योगा का होना चाहिए उसमें। As a distinguished former Indian Railway Traffic Service Officer from the 1981 UPSC batch who retired as Director of IRTS, the Ministry of Railway and the Government of Assam, currently he holds the position of Advisor, Transport and the Assam Government's agency AIWTDS.
रॉबिन सर को कई सारे सम्मानों से भी नवाजित किया गया। रेलवे मिनिस्टर्स मेडल फॉर मेटीरियस सर्विस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिल्वर स्टार एंड सिल्वर एलिफेंट मेडिकल्स, medals for his contribution to the Scouts movement, awarded Best Quizmaster in Assam twice. Participated in the group study Engage program sponsored by Rotary International to the USA. He has represented Indian Railway as an official delegate to Bangladesh and also delivered lectures in Singapore. मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि बिजी शेड्यूल से आप यहाँ आए। मैं आपका मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि हमारे विद्यार्थियों को आप 2 शब्द कहें और उन्हें प्रेरणा दें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री रॉबिन कोलिटा सर का। Thank you, and thank you for those generous words about me. Nice to see Mr. Swarup again here. We've been sitting together a number of times in the last few years. It's very nice to see you here in London. The person who speaks always feels great when you find the hall completely full. And if there are people standing without seats, it's even better. I presume you are all candidates for civil services, or maybe some of you have just come to find out how it goes. How many are actually not sure that I assume most of you will be for civil services. How many are not sure that they really want to go for civil services or not? Just raise your hands. Oh, it's good to know everybody is in for civil services. Before I say anything, let me tell you one thing. All our fingers are not the same size or shape or length, is it? I'll mix up my talk in English and Assamese. Is it okay? Okay. So, গতিকে সকলোৰে এই যিকোনো কামৰ কাৰণে সিভিল সার্ভিস কিয় একাডেমিক্স হওক সিভিল সার্ভিস হওক টেকনিক্যাল জবস হওক বা রিসার্চ ওয়ার্ক হওক everybody does not have the same inclination or the same capability to achieve that. Yeah, কোনো হাত উঠোৱা নাই সিভিল সার্ভিসত ইন্টারেস্ট নাই বুলি কোৱা মই ভাল পাইছোঁ এইকাৰণে তাৰমানে everybody is very intent আৰু প্ৰত্যেকে বিচাৰিছে যে তেওঁ হয়তো আপোনালোকে কিমান অলৰেডি সিভিল সার্ভিস এটেম্প্ট কৰিছে how many have attempted? Very few have attempted already. UPSC, APSC, UPSC, how many have attempted? And APSC? Okay. And the rest have not attempted. Tumalok ahisa janibo kane keneke attempt korbo. It's very good. It's very nice that you have come. Agote mo কৈ থৈ দিওঁ যে সকলোৰে কাৰণে সকলোবোৰ কাম নহয় গতিকে you must be very sure যে যিটো পাঠ তোমালোকে যিটো পথ ল'ব বিচাৰিছা are you really committed, are you really going ahead full hog তোমালোকে কৰিম বুলি এটা মনতে ধৰি লৈছা স্মাৰ্ট ওয়ার্ক মানে এনেকুৱা নহয় যে তুমি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 20 ঘণ্টাই পঢ়িলা 4 ঘণ্টা শুলা ন দেন ৰেট্ৰগেট ষ্টেপ হ'ব কিন্তু তোমাৰ শৰীৰত তাৰ অপকাৰ হ'ব তো যি পঢ়িলে একো মনত নাথাকিব গতিকে ইউ মাষ্ট কিপ ইয়োৰছেলফ ফিট ৰাখিবলৈ কি লাগে প্ৰথম কথা যে এটা ভাল হেবিট লাগে হেবিটটো কেনেকুৱা সোনকালে উঠা ৰাতিপুৱা সময়ত তেখেতেও কৈছে মই ৰিপিট কৰোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত যিটো ইনটেক হয় পঢ়া শুনাৰ যিখিনি হয় সেইখিনি যিমান এফেক্টিভ হয় বেলেগ সময়ত নহয় ৰাতিপুৱা সময়তে আটাইতকৈ ভাল একেবাৰে সোনকালে উঠি পেলাই এইটো অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰি য়োগা কৰি মইতো ছাজেষ্ট কৰোঁ স্পেচিফিকেলি কেইটামান য়োগা আছে সেইবোৰ আমি পিছতো ডিছকাছ কৰিব পাৰিম সেইকেইটা কৰিলে মাইণ্ডটো ক্লিয়াৰ হয় উশাহ নিশাহ লোৱাৰ এটা ছিষ্টেম আছে ৰাতিপুৱা যদি সেইটো কৰা প্লাছ ওমকাৰা বুলি এটা কথা আছে ওমকাৰা কৰিলে ওম শব্দটো যদি দীঘলীয়াকৈ ৰাতিপুৱা উঠি বহি যদি you take a long breath and you say Om
কিবা এতিয়া হয় কি ওংকাৰা এইটো ওংকাৰা বুলি কয় সেইটো গোটেই গাৰ তেজটো ওপৰলৈ উঠি আহে ইট গোজ ইয়ৰ ব্ৰেইন ইট ক্লিনচেছ ইয়ৰ ব্ৰেইনটো চাফা কৰি দিয়ে তেজে আৰু ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে মাইণ্ডটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় মাইণ্ডটো কিন্তু ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া তাৰপিছত পঢ়া আৰম্ভ কৰিলে বহুত কথা মনত ৰাখিব পাৰে ইউ হেভ টু টেক কেয়াৰ অফ ইয়ৰ ব্ৰেইন ইউ হেভ টু টেক কেয়াৰ অফ ইয়ৰ হাৰ্ট খাদ্য কি খাইছা এইটো খুব জৰুৰী কিন্তু কি খাদ্য খাইছা সদায় এটা ডিচিপ্লিন মেনাৰত এটা সময়ত খাব লাগে বেছি খোৱাও বেয়া কম খোৱাও বেয়া আৰু বেছি মানে ৰিচ ফুড খোৱাটো বেয়া ইয়াৰ কাৰণে গতিকে বেছি ৰিচ ফুড নাখায় খুব মাইল্ড ফুড কিন্তু লগত ভিটামিনছ প্ৰটিন যিবিলাক যাতে বেলেঞ্চ থাকে ঠিক আছে বেলেঞ্চ ডায়েট খোৱাটো খুব জৰুৰী বহুতে নাভাবে খালি কৰি থাকিলে হ'ব কৰি থাকিবৰ কাৰণে জোৰটো লাগিব নহয় সেই ফিটনেছটো লাগিব নহয় সেইকাৰণে খোৱা আৰু খুব জৰুৰী এটা কথা মই কওঁ 7 ঘণ্টা 7 আৱাৰ্ছ মিনিমাম শ্লিপ ক্লিয়াৰ শ্লিপ 7 ঘণ্টা প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটে যেন মনত ৰাখে 7 ঘণ্টাতকৈ তলত 6 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা যিমানে কৰা সিমানে ৰেট্ৰগ্ৰেড হৈ যায় সিমানে পাহৰাৰ চান্স বেছি 7 ঘণ্টা মিনিমাম লাগে কিছুমানক 8 ঘণ্টা লাগে কিন্তু মই কওঁ 7 ঘণ্টা মিনিমাম লাগে ডোণ্ট ফৰগেট দেট ইউ মাষ্ট শ্লিপ ফৰ 7 আৱাৰ্ছ সেইখিনি টোপনি ক্ষতি কৰি বেছিকৈ পঢ়িলে একো লাভ নাই একো মনত নাথাকে আৰু এটা খুব জৰুৰী কথা it is not only important to know what to read or what to study it is also very important to know what not to study what not to read বহুতে ভুল কৰে যে মই এইখনো পঢ়িম সেইখনো পঢ়িম এইজনৰ অৰ্থৰ ল'ম সেইজনৰ অৰ্থৰ ল'ম মই চব পঢ়িলে বেছিকৈ জানিম ৰং ইউ মাষ্ট ন' হোৱাট টু ৰিড চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ কাৰণে আজি ইটছ নট ৰকেট চায়েন্স আজি বছৰ পিছত বছৰ ট্ৰেণ্ডিং কিছুমান লিটাৰেচাৰ আছে ট্ৰেণ্ডিং কিছুমান কিতাপ আছে সেইখিনি ৰিভিউ কৰিলেও ওলাব আগৰ কিছুমান কেণ্ডিডেটক সুধিলেও কৈ দিব বা এইটো সকলোৱে জানে যে এইটো কাৰণে পলিটিকেল চায়েন্সৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে ইকনমিক্সৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে ডোণ্ট গ' বিয়ণ্ড দ্যাট নট নেচেচাৰী সেইখিনিকে ভালকৈ পঢ়ি এবজৰ্ব কৰিব লাগে আৰু ৰিভাইজ কৰিব লাগে আৰু এটা খুব ডাঙৰ কথা প্ৰয়োজন যে আল্টিমেটলি হোৱাট মেটাৰ্ছ আল্টিমেটলি ইট মেটাৰ্ছ হোৱাট ইউ ৰাইট ডাউন অন পেপাৰ পৰীক্ষা হলত কি লিখা যিমানেই মনত ৰাখা যিমানেই চেষ্টা নকৰা যিমানেই যি নকৰা আল্টিমেটলি হোৱাট ইউ ৰাইট ডাউন অন দ্য পেপাৰ ইন দি এক্সামিনেশ্যন হল ইজ হোৱাট মেটাৰ্ছ গতিকে ৰাইটিং স্কিলছ খুব প্ৰয়োজন আপ টু মেইনছ তাৰপিছততো কমিউনিকেশ্যন স্কিল লাগিব তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে ভাইভা দিবৰ কাৰণে তেতিয়া ইণ্টাৰভিউ স্কিল লাগে দেট কেন বি ডেভেলপ বাট আপ টু মেইনছ ৰাইটিং স্কিলছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছত কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়ৰ নেক টু ন' কাৰণ ইমান সময় নাপাবা যে গোটেইবিলাক বস্তু চিন্তা কৰি তাত এলগৰিদম কৰি তাত লিখি উলিয়াই পেলাই আনচাৰ ন' ইউ উইল নট বি এবল টু কমপ্লিট দ্য পেপাৰ বহু ক্ষেত্ৰত কি উত্তৰটো হ'ব পাৰে most likely answer and what happens is most likely answer quite often happens to be the answer এটা লজিক ডেভেলপ কৰিব পাৰিব লাগিব নিজৰ মনতে আৰু সেই মতে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে বোলে ইকি পিংকি পংকি কৰি পেলাই দিলে নহ'ব ইউ মাষ্ট হেভ আ লজিক বিহাইণ্ড ৱাই ইউ আৰ চুজিং এ পাৰ্টিকুলাৰ আনচাৰ আজিকালি উত্তৰবিলাক আগৰ নিচিনা আমাৰ সময়ত বেলেগ আছে আমাৰ সময়ত 4টা অপশ্যন আছিলে সেই অপশ্যনে এটা ঠিক কৰিলে হৈ যায় আজিকালি 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰতো it may be A and C, B and D, it may be none of the above, it may be this but not that, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত অপশ্যন থাকে so logic mental logic develop কৰাটো it happens when you keep practicing গতিকে আগৰ পেপাৰবিলাক লৈ প্ৰেক্টিছ কৰাটো খুব জৰুৰী আৰু ৰাইটিং স্কিলছ ডেভেলপ কৰাটো সাংঘাতিক জৰুৰী এখন ৰেজিষ্টাৰ্ড লৈ যিখিনি পঢ়িলা আজি ৰাতিপুৱা যিখিনি পঢ়িলা 2 ঘণ্টা সময় তাৰ পিছৰ 1 ঘণ্টাত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি নোট কৰি লোৱা just make notes out of that. You write what you have learned. Please remember, a civil service পৰীক্ষা তো academics পৰীক্ষা নিচিনা নহয় কোনোবা BA, MA, BSc, MSc, BTech এইবোৰত যিবোৰ লিখিব লাগে বা you go for your PhD তেনেকুৱা ধৰণৰ লিখিলে ইয়াত নহ'ব you are asked to write a particular answer in 500 words minimum words of maximum idea দিব পাৰিব লাগিব পেপাৰত and correctly
It's not that you just fill up 500 words and come back. No, it will not help you. 500 words, each word must be weighed, each word must be counted, each word must have a meaning, and it must be in place. গতিকে সেই যিটো লিখিব পৰা শক্তি 500 wordsৰ এটা উত্তৰ তাত গোটেইখিনি কথা আহিব পাৰিব লাগিব. That must be developed in time with practice. Get a mentor, get mentors who have done the exam earlier. Write this and show it to them. Say, sir, tell me, is it correct? Is it wrong? Am I deviating? Am I short of the requirement? Or should I write more? Please, mentor is very important. But a mentor will tell you what is right, what is wrong, which path you should take, which path you should avoid. Because এই পরীক্ষাটো ঠিক একাডেমিক পরীক্ষার নিচিনাকৈ এটেম্প কৰিলে নহ'ব. এই পৰীক্ষাটোত absolute precision is very important. এই absolute precisionটো প্ৰথম কথা আহিব লাগিব কনফিডেন্স, দ্বিতীয় কথা আহিব লাগিব ডিভোশন এণ্ড কমিটমেণ্ট, তৃতীয় কথা you should be physically fit to take that. Fourth is ডাইভাৰ্সন যাতে নহয় মনৰ ডাইভাৰ্সন বেলেগ বেলেগ কথা আহি কালি এখন চিনেমা চাওঁতে এইটো কেৰেক্টাৰ মোৰ এনেকুৱা লাগিলে এই গানটোৰ এইখিনি মিউজিক forget it. You concentrate only on what you have in mind. So to talk that you have to have your mind very cool and clear. Or boy to go by age boy UPSC learning iman cost iman learning. আমি যেটা দিছিলো মই 1981 এক্সামস যেটা দিছিলো UPSC না আমার কোনো মেন্টর আসলে না কোনো সিনিয়র আসলে কবলে তুমি এইটো পঢ়িবা বা এইটো সাবজেক্ট লোৱা এইটো নলবা এইটো পঢ়িবা না আমার সময়ত গুগল আসলে না ইন্টারনেট আসলে না ওয়াইফাই আসলে একোৱে নাছিল. There was nothing. আমি ব্লাইন্ড শট দি পেলাই আন্দাজ কৰিছিলোঁ যে এইখিনি কাৰণে কিন্তু আমি সুধিছিলোঁ কাৰোবাক যে কি ছাবজেক্টবিলাক ট্ৰেণ্ডিং হয়. তেতিয়া আগৰ হেৰি চালে গম পাওঁ আচ্ছা এইটো ছাবজেক্ট ট্ৰেণ্ডিং হয় এইটো ছাবজেক্টত ট্ৰেণ্ডিং নহয়. ট্ৰেণ্ডিং মানে যিটো ছাবজেক্ট ভাল কৰি আহিছে লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছ য'ত মাৰ্কছ বেছি পায়, য'ত লিখিবলৈ সুবিধা, য'ত নিজৰ প্ৰব্লেম নাই সেইখিনি পাৰি. এতিয়া বহুত ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আছে যিবিলাকে ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাবজেক্ট নলয়, তেওঁলোকে ছ'চিয়লজি, হিষ্ট্ৰী, ইকনমিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী এইবোৰ লয়. বহুত ডক্টৰ্ছ আহে MBBS, তেওঁলোকে চিভিল ছাৰ্ভিচ ক্ৰেক কৰে, তেওঁলোকে মেডিকেল ছাবজেক্ট নলয়, তেওঁলোকে লয় এই এনেকুৱা ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী নিচিনা ছাবজেক্ট লয়, পলিটিকেল চায়েন্স. Why? Because these are easier. মই একদম প্লেইনলি কৈছোঁ these are easier than their own subjects. Secondly, এইবিলাকত a point of view can be given by going through whatever you read. But mathematics, for example, if you are extremely good in mathematics, you are absolutely sure of your maths, fine, go ahead. But if not, সৰু ভুল এটা কাৰণে 20 নম্বৰ বেছি যাব, 25 নম্বৰ বেছি যাব. But in history or something, if you write something and you know the facts correctly, you may be slightly off the truth, you will still get some marks. Economic incoterminous subject lawyer, these are trending subjects. Trending subject like আগতে ডিসাইড কৰি ল'ব লাগে কি কৰিব পাৰে. আৰু সাধাৰণতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা বা মাষ্টাৰ্ছ কৰাবিলাকৰ নিজৰ ছাবজেক্টটো should be one of the subjects options. It will be that. And then of course keeping in touch with the realities of life or day-to-day কি হৈ আছে. And newspaper, not a newspaper, maybe a couple of newspapers minimum is a must. এটা টিভি চেনেলত কি হৈ আছে, নিউজত কি ঘটনা হৈ আছে, দুখন নিউজ পেপাৰ, এখন নিজৰ ভাষাত, এখন মেবি ইংলিছত, যদি হিন্দী পঢ়ে হিন্দী, you have to follow it up daily. তেতিয়া you are in touch with the world, what is happening, both locally and nationally or internationally. That is very important. বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয়, এইবোৰ কৰি থাকিলে পিছত developing that subject becomes less strenuous. পঢ়াই কৰি থাকিলে নহ'লে পিছত গৈ পেলাই সেইটোৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ কি বহুত পঢ়িবলগীয়া হয়, টাইম নহয়গৈ, নিজৰ ছাবজেক্টত টাইম নহয়গৈ. চ' এইবিলাক হ'ল চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে এটা কিছু মই ছাজেশ্যনছ দিলোঁ. ইটছ ইজিয়াৰ ছেড দেন ডান, সেইটো ঠিকেই. কিন্তু মই যেতিয়া নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাবোঁ কি কৰিছিলোঁ, আমিতো একো নাজানিছিলোঁ. মই এজন লেকচাৰাৰ আছিলোঁ ইকনমিক্সত, মই এডভান্স কলেজত পঢ়াইছিলোঁ. চ' মই ডিচাইড কৰিলোঁ যে মই ইকনমিক্সটো ৰাখিম, কাৰণ মোৰ সময় একেবাৰে কম আছে. সেইটো ছাবজেক্ট মই যিহেতু নিজে পঢ়াইছোঁ, আই কিপ দেট ছাবজেক্ট পঢ়াইছোঁ.
Second subject এটা ল'লো সেই তাহানি সময়ত ট্ৰেণ্ডিং ছাবজেক্ট ছ'চিয়লজি কিন্তু মই যিটো ভুল কৰিলোঁ সেই ভুলটোৰ পৰা মই আজি তোমালোকক কওঁ মই যে কৈছোঁ ইউ মাষ্ট ন' নট অনলি হোৱাট টু ৰিড হোৱাট নট টু ৰিড খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মই ছ'চিয়লজি পঢ়িব আই হেভ ন' আইডিয়া হোৱাট ছ'চিয়লজি ইজ মই ল'লোঁ মোৰ হাতত মাত্ৰ 20-22 দিন সময় আছে মই ছ'চিয়লজিৰ বহুত কিতাপ পঢ়িলোঁ মষ্টলি ফৰেন অথৰ্ছ পঢ়িলোঁ কোনেও মোক গাইড কৰা নাই যে কি পঢ়িব লাগে যে ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সটত ছ'চিয়লজি কোনকেইখন কিতাপ পঢ়িলে ভাল মই থিয়ৰীত বহুত ফৰেন অথৰ্ছ পঢ়িলোঁ and I really thought I knew a lot about sociology. Both of them have a tremendous amount of experience in guiding youths and candidates and aspirants across the nation for the exams of civil services, and so many students have already cracked this exam. With us, a very young and dynamic person from Guwahati University from the Department of Sociology, Mr. Robin Kolita sir has also joined us for the discussion. And today's discussion in the conclave, the main agenda and the topic is how to generate the ecosystem of a strict discipline of studies which is required to clear exams like UPSC at the national level. Because if I tell you regarding the exams conducted under Assam Public Service Commission, definitely it has to be the youths from Assam in majority who will be cracking this exam for sure. But what about youths from Assam or Northeast overall? What or where are we lacking, because of which we are not able to see numbers or in more numbers in the prestigious result list of exams conducted under UPSC. Whereas on the other hand, from states like Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra, even states like Haryana, we see a huge number of students cracking exams conducted under UPSC. And we have Anil sir, Robin sir with us, and they have traveled, they have received or got this exposure of meeting students from across the nation, from various parts of the country. And we would like to hear from them with their tremendous amount of experience. And we have also invited Ritvik sir with us because he is the face of new generation among the youths. And he is an assistant professor in the prestigious Guwahati University in the Department of Sociology. Under his able guidance, so many youths are coming up to develop their career. So I think we have a very, like I'm sure and this is certain that we have a very brilliant panel members. And once again, I welcome all the panelist members to our conclave conducted by CSAP IAS Academy and supported by Pranjyotis College, Shri Anil Swarup sir, Shri Robin Kolita sir, and Shri Ritvik sir. With this basic introduction, I would like to start with the first question. And my first question will be for Shri Anil Swarup sir. And in between, I would also like to mention that we will also be taking questions from the students and from the aspirants in between. If any one of you are having any question in your mind, you can raise your hand and we will try to get your question immediately. Anil sir, you have traveled not only the nation but across the globe, and you have seen, you have talked, you have experienced talking to the bright minds of the globe. At the same time, you have also traveled to Guwahati quite many number of times in the last few years. What is the basic difference you think, along with a suggestion, where Assam is lacking in terms of clearing the exams conducted under UPSC, and where we need to work? First of all, let me state it very clearly. I have been interacting with aspirants to Assam Civil Service here, and I find some of them are really bright. In fact, I asked a couple of them,
are you preparing for UPSC because you deserve to be there? They said, yes, sir. Then the next question was, are you seeking any guidance? That's where the answer to your question comes. Right now in Assam, we do not have the right guidance for the students who are capable of qualifying for UPSC. And if you recall my discussion with you, my suggestion to you was that CSAP has the credentials to become an institute to guide students to go to UPSC. You have the credentials. You have to examine and study what other institutes are doing and what additional inputs are being provided in other institutes to enable at least some of them to begin with, to start first aspiring to go to become civil servants, UPSC exam, and then see how do you assist them. And I distinctly remember there was a girl who I had guided for the interview, and she is actually qualified. And I don't know what has happened thereafter. So what you need to do is catch hold of those students who are keen. Let them be a handful, let them be 5, 6, 10, doesn't matter, the number doesn't matter. In the first year, maybe only 10 students will come forward. If 2 qualify amongst them, you can imagine what's going to happen thereafter. So instead of taking a big bash to begin with, I think an institute like CSAP should take the initiative, seek from students who are appearing this year. I am told the exam is from October, or those have appeared in last year. Find out who's interested in UPSC examination and start the guidance program forthwith. Because what is needed, as I keep saying, is not coaching. What is needed is guidance. The reason is very simple. If a child requires to be coached to get into the UPSC, I don't think he will go to it. If the child does not have the fundamental caliber, then caliber cannot be developed through coaching in 1 year or 2 years. But as I told you, I know of many students who came to me for the interview who I believe have the caliber in them. The next step is, how do you guide them? So I am giving a very concrete suggestion to you. In next 10 days, 15 days, identify 1, 2, 10, 15 students who are preparing for 2026, 27, 28 examination and sit down with them. Parallelly, try and find out what is the additional input that is being provided by other institutes for preparing for civil exam. You have to look at it very practically. You can't be very ambitious to begin with, because to begin with you will not have too many people. Once the children start seeing that amongst us some are qualifying for the UPSC, CSC, there will be more aspiration. So that's my take on it. Thank you so much, sir. What basically I have understood from sir's opinion is that sir has been guiding so many students in our institute in the last many years, and throughout sir's guidance, so many students have cracked APSC CCE exam. Even last year, out of 105 students who had cracked APSC from CSAP IAS Academy, if I am right with my facts, around 25 to 30 candidates were directly from Anil Swarup sir's guidance. So sir found out that so many, out of those 25 to 30 students, many students already have the potential of cracking the UPSC and not only APSC. But the major problem which we face, or where the students are facing, is that once they are cracking the exam like APSC, conducted under APSC, they do not get the sufficient amount of time again to prepare for UPSC in Assam. Been here. Yes, sir. And you would have asked her to speak. Rather than we oldies speaking here, if she had come and spoken here, first it would carry more conviction with them, and then she would have spoken in public about her aspiration to crack the UPSC, CSC. Get hold of people who qualified, ask them, have a very intensive dialogue with them. 3, 4 people, if you can make them crack the exam in the next 2 years, your job is done. Thereafter it will go. Thank you, sir. So, I would like to ask the same question again to Robin sir, under whose guidance, like Robin sir has been there with us, and it will not be less if I mention the number. He has guided in 2023 for the APSC exam around more than 600 to 700 candidates at CSAP IAS Academy, and out of which the total number which
was there for CSAP that year was 305 with like out of 913 posts in 23 APSC and Robin sir has single-handedly handled around 500, 600, 700 students in a time duration of 2 months. He was guiding the students from the morning 10 o'clock and some days like he was there guiding students till 10 o'clock at night. So I would like to hear from Robin sir what he has seen among the candidates about their potential, whether they or how they start with, when they start with, and how they prepare for the exams like UPSC. And I would like to tell you that under Robin sir's guidance, one student whose name is Ricky Pradhan Lakar, he has also cracked UPSC CSE from CSAP IAS Academy, whose rank was 234 in 2023. So, sir, we would like to hear from you regarding the strategy and how we move ahead for the UPSC preparation, or how our candidates who have come today, how they start with their preparation. Thank you, Lekha. There are some basic issues that we must understand. Now, among the candidates who are our students who are here, some of them feel that UPSC is too tough for them. Some of them feel that they can try it out, but they're not very sure. There are very few who will come and say that I am going to crack the UPSC. That confidence level is a little low, which is our bane, which is our problem in this region, especially in Assam. I have personally seen how the whole problem of preparing for UPSC is being tackled in other places. During our time, Delhi was, and even today it is, the biggest pocket for UPSC. Allahabad was a very big pocket. Patna was a big pocket. Chennai was, at that time it was called Madras, was a big pocket. And to some extent, even Kolkata was a pocket. Somehow Western region didn't feature in this. I went and found out how they prepared. In Allahabad, I went and actually sat with some of the students in the dining hall. Their end all and be all was UPSC. They would come to the dining hall to have their breakfast and talk about the issues in the newspaper that day. They would go back to their rooms and talk about what can happen as a result of it. You see, this is not just knowing data. It is about analyzing data and finding out what can happen. They were in touch with the ground. I saw in Delhi there used to be so-called barsatis, if you know about it. Buildings have one small room at the top, which is not normally used, it is kept there. It is called a barsati. And there would be 7-8 people, crammed into that room. They were mostly from Bihar. I found they were mostly from Bihar. They would cram themselves there, sleep on the floor, eat sattu. And from the time of waking up till the time of they were going to sleep, they were discussing UPSC. They used to think UPSC, eat UPSC, drink UPSC. There was nothing else. You know about Arjuna and that, Gandhi, how he had to aim at the bird. He only saw the bird's eye, nothing else. So that is the kind of commitment you must have, which is unfortunately lacking in Assam. If I am wrong, please correct me. That is not there. This is from the side of the candidates. Because somehow we have had that feeling that, UPSC, it's like Delhi, bahut dur hai. So UPSC is very far away. How can I crack UPSC? But I can tell you, 2022, there was a candidate from Tinsukia who had come to me. Of course, he had written the mains. And then I had taken some sessions with him. I'm very glad to say he didn't get into IAS, but he got into central services. And he later on told me, sir, it was only because of those few days with you that I have built my confidence and I did well in my interview. 2023, Lekha was already mentioned, there was a candidate who came in for APSC, but when we found out he's good for UPSC, we also gave him some masala for the UPSC interviews.
And he got it. And he came back to us and said, sir, it is because of that particular sessions, those sessions that we had, that I could make it into the UPS. So it's not that our people are not there, they are there. What they lack is the confidence, what they lack is the feeling that they can do it. Most people who are committed to UPSC from this region, they think, no, Guwahati no, Guwahati napam. They go off all the way to Delhi. They get into cramped classrooms where they hardly get a seat to even sit down. They stay in dingy rooms, unhealthy atmosphere, and still they want to go there. Why? Because they think Delhi korile moi pa UPSC. Guwahati korile no. That is something which we have to break. That is something which CSAP can break. I cannot talk about others, but at least can say CSAP can break that. And as Mr. Swarup has said, I also urge upon the Kharu that you take this up immediately to allay the fears of the candidates that Guwahati no, Guwahati cannot do it. It's not correct. I am involved in 2-3 other organizations where they have requested me to be advisor, to find out how candidates should be mentored. I'm doing that already. They again, the institutions who have invited me to be an advisor, they said, sir, let's do it in Delhi. We'll bear the expenses. I think I told you about this also. They wanted it to be done in Delhi because they had little confidence in Guwahati. I told them that there are people, there are organizations in Guwahati who will do it. But we have not been able to build that confidence among our people who sponsor also. People who sponsor, people who will write the exam, and people who will actually organize the mentorship. Somewhere that is missing, so we have to bring that. The same candidates who, when they go to Delhi, there are a lot of people in Delhi who have done it, who have made it. We didn't because we have no idea. We had no idea that time that Delhi would do it. But many years, subsequently, people from Assam have gone into Delhi and done it. They made it. People from other places like Manipur. Manipur is a success story. I found number of last year also, I think Manipur's result was much better than what Assam did in the UPSC. 10-11 people got it from Manipur, a small state. It's the grit, the determination, and the confidence that they will do it. They have done it. So why can't we build that? What we need is this. What we need is our belief that we can do it and we will do it. We'll stay at Guwahati and do it. If necessary, we'll have Anil Swarup, Mr. Anil Swarup to come once every month, twice every month. We'll have people who can do it. We are here. I am willing to give my entire time. But let's do it. Let's not feel that Guwahati cannot do it, Delhi can do it. This is my appeal to you all. Okole বিশ্বাস কৰা আৰম্ভ কৰা নিজক আৰু আমাৰ ঠাইখনক Things are happening from Guwahati now. International ঘটনা হৈ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া অসম পিছ পৰি থকা নাই আৰু Assam is on the way up now. The graph is going now in every aspect. Why not this? মোৰ সময়ত মোৰ batch there were 14 of us made it. So 14জন একেলগে আমি পাইছিলো services, IAS, IPS, central services. I don't know after that, mine was 81 exam batch. I do not know whether after that there were another group of 14 or not. I don't know, I have not kept in touch. Amak kamusa pinabolo kuno ahan asile, newspaper to eko ahan asile, kuno social media pa interview lobole ahan asile because it was not there. Kintu etia ami hiblak sob korbole raji asu. Kintu first and foremost our boys and girls must pick up that challenge. আৰু বিশ্বাসটো আহিব লাগিব যে আমি পাৰিম ইয়াতে থাকিয়ে পাৰিম আজি you have seen I'm not trying to comment anything আজি এখন ভিডিও ওলাইছে ৰাজভৱনৰ পৰা they are sponsoring 10 candidates to go to Delhi. I would like to ask Rajbhavan, why not here? Why can't we do it here? আমি যদি প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰোঁ এজনো যদি পায় সেই 10জনৰ ভিতৰত there is no guarantee এই 10জনৰ ভিতৰত দিল্লীত গৈ পেলাই পাব বুলি কিন্তু there is no guarantee here also, but we can also prove it. আমি যদি তার এজনো উলিয়াব পাৰোঁ civil services goal, next year আৰু আহিব, next year আমি 2-3জনকে then we will have bigger groups coming up. এই কনফিডেন্সটো আমাক লাগে মই আৰু ৰেগুলাৰ নকৰোঁ কিন্তু মই হাৰে হিমে যে বিশ্বাস কৰোঁ যে we can do it and so we will do it. Acha, duta simple question kudu as informed by Mr. Dekharu. Okay, what is the latest film that you all have watched?
latest film? Narasimha, okay, that's good. Sayyara. Okay, now, Pune says Sayyara, Pune says Arbiter. Okay, last turn, okay, stand up please. Okay, last turn, stand up. Okay, now I am asking her, tell us about the story of the Sayyara. She can tell me, okay? You guess it? Now the next question comes, that this year UPSC there will be a question that give the sociological implications of Sayyara. Now, most of us will have a second thought about it. Why? The very moment we have transformed the entertainment mode into an academic or serious mode, suddenly all the things will be changed. We are taking an extra burden to us, right? We have to write, we have to think, we have to analyze. Next question. Okay, one question to who? Next question. Who is Mr. Anandaram Borua? How many of you know about him? Who is Mr. Anandaram Borua and why he is famous? Wow, Degalara. Yeah, please. He was the first from Assam to appear for civil service. And among the India? Among the India was sixth. He was the 6th IAS officer from Assam. And now, in which area we are lacking? The answer is, first, confidence. We have a tendency to follow the crowd, but we don't know why we are following the crowd. We have a tendency to follow, but we don't know why we are actually following the crowd. This is a tendency that we all are having. Going through a road, if you are looking, 9 people are assembling in a corner. You are the 10th one. You are going and you are asking them, why you all are assembling? Okay, we are looking at the sky. Oh, you are looking at the sky. I have seen the rainbow. Itna acha laga. Iman बढ़िया लगी से rainbow. Okay? But let me tell you, there is no any rainbow. I am asserting that I am seeing a rainbow to go with the crowd, to assemble with the crowd, to get an assertion from the crowd that I am also a part of that particular crowd. Don't do that. You should have the confidence to know that why you are following the crowd. As Robin Kolita sir have already told, I will do it because I can do it. I will do it because someone else wants me to do it. I will do it because I have to do it. First one is your self-determination. Second one is your determination by force. Third one is the determination for which you are paid. This is not your determination, but the determination of others. You should have the confidence that I will definitely do it because I have the potential and I can do it. You know, while you are preparing for any kind of public examination, we are having a tendency to follow a kind of default guideline, okay? Going through the 14 hours of reading, 12 hours of reading, ye kitab padho, wo kitab padho, Kurukshetra, Yojana, these are all the default settings that we all are trying to fit, right? But we all are having different potentials as a human being. Karobar 12 ঘন্টা পড়িলে হয়, কারোবার 6 ঘন্টা পড়িলে হয়, কারোবার 10 ঘন্টা পড়িলে হয়. Don't follow others. Because you are the best person who knows about yourself. It is not your parents, it is not your best one, it is not your loved ones, but you are the one who knows best about yourself. Tumi ki koribo para aru tumi ki koribo nwara. Ei kothato jonar ekmatro best person jon hol tumi. You know, jeti ami public exam dibole jao, looking at the crowd, I always meet many students from our university who are having all the potentials to become the best civil servants of the country, but quote like kore janane confidence. Confidence kyo? By looking at the crowd. Let me tell you, Indian public service examinations, most of the service examinations are always about quantity, not always about quality. As sir already told us, it is only the 1 or 2 lakh seriously aspiring candidates who are actually seriously preparing for the civil service. If you have that kind of determination that I will definitely do it, you can do it, but you have to be that confident enough.
preparing for a civil service, going for the interview, looking at all the candidates, okay, iman dhuniyake despati kori aise, studious and lagise, how can I crack it? Okay, all the sweats will come out from your face. Ekdom nervous hoy jaba. I have seen our students, they all are having the potentials. Dhuniyake prepare kori gol. Interview সময়ত nervous, একো কব নোৱাৰিলে বলে কিয় কব নোৱাৰিলা? স্যাৰ মোৰ আগৰজনে ইমান পঢ়ি পেলাই ইমান কথা কৈ আছে মই নাৰ্ভাছ হৈ গলো। নাৰ্ভাছ হ'বলগীয়া কি আছে? তেওঁ যিমান পঢ়ি আহিছে তুমিও তাতকৈ হয়তো বেছিয়ে পঢ়ি আহিছা। But looking at them, you are certainly getting the nervous attack. So don't look at anything. You should look at yourself because you are the best person. I have met all the many students in our university. সকলোৱে কয় যে মই স্যাৰ একো কৰিব নোৱাৰো, I can't do anything. বলে তুমি গান গাব পৰা নোৱাৰো, ভালকে পঢ়িব পৰা নোৱাৰো, নাচিব পৰা নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰা? স্যাৰ মই বৰ ভালকৈ শুনিব পাৰো। That is also an art. এই যে নিজকে শুনিব পাৰো বুলি একচেপ্ট কৰি ললে, that is how he or she is accepting her capability. সকলোৱে যে ভালকৈ লিখিব লাগিব এইটো নহয়, আৰু মেক্সিমামে এইটো কথাও নাজানে যে we can write UPSC in Assamese. আমাৰ বহুতৰ এটা ডাঙৰ কনফিডেন্স কোড লেক কৰে জানেনে? Confident English. Because we think that অসমীয়াত যে আমি 10-12টা যে গ্ৰামেটিক্যালি এৰৰ কৰি পেলাই কথাটো কৈ দিও, we tend to ignore that. We tend to forget that. আমি যে মই কৈ আছো যে এতিয়া এইটো যাব লাগিছিল, এইটো আহিব লাগিছিল, I am saying all the grammatical errors. But while we are saying something in English and it is grammatically incorrect, I am talking about the speech and I am talking about the conversation, right? Writing it is different part. But we lack that. We always having a kind of nervousness while delivering anything in English. Nervous is all about all the permutation and combination will come to your mind, but forget about it. Be the boss of your own thought. We Indians have already shown the world what we can do. Western powers, they have conquered the world with Astra. We Indians have conquered the world with Shastra. Saraka, Baramihir, Shustrata, they all are the contributions of India to the power of knowledge, because now we have realized as knowledge is power, power is knowledge. Knowledge is not always about the strength. And we Indians, we Assamese people are best in giving that knowledge. If you have that message clear in your mind, no one could stop you to reach at the apex level of intellectual hierarchy. Be that confident guy. And the thing is that while we are sitting in an examination, just remember the answer is in front of you. I am talking about the objective questions. A, B, C, D. The question is in front of you. We have a tendency to go for the policy of acceptance. Means we have to choose the right answer. But can we reverse it? Can we go for the policy of negation? What cannot be the right answer? If you choose the wrong answer, the right answer will definitely come to your answer. আৰু কিন্তু কি কৈছো ধৰিব পাৰিছে নে? ৰং যদি তোমালোকে কৰিব পৰা যায় এইটো হ'বই নোৱাৰে, তেতিয়া ৰাইট এনসাৰটো তোমালোকৰ সন্মুখত জিলিকি থাকিব। তো লাইফত সদায় পজিটিভক নেগেটিভ আৰু নেগেটিভক পজিটিভ কৰিবলৈ যদি শিকা, you will definitely conquer in your life. Don't follow the crowd, be the leader and the crowd will follow you. If you have that confidence, you will definitely can crack UPSC, APSC and every struggles in your life. গতিকে ইনিশিয়ালি লেখাৰ কথাত মই প্ৰথমে এটা এইখিনি ক'লো, and in the later part of our discussion আমি আৰু কথা কৈ থাকিম, তোমালোকৰ লগত ইন্টাৰেকশন কৰিম। Thank you. You have to structure your existence as was suggested in my talk, clearly outlining what you would do in every moment of your existence with a constant question that you should ask yourself whether what you are doing will help you become a civil servant. As simple as that. So you will then not be wasting a single moment, because competition is tough, it's a tough exam, so you have to totally commit yourself. There's no other answer to it. Thank you, sir. As an aspirant, we face a lot of issues while preparing for this exam. It can be your
answer writing skill development. Many people we see every day, they come to us and like, even now, around 800 students, 750 plus have cracked from CSAP IAS Academy in this year APS ACC prelims. And we have a core group of batch where people are writing answers, they're practicing answers for the upcoming mains exam. And they are submitting their answers at 2 a.m. and 3 a.m. Sometimes at 1 a.m. And even our faculty members with experience of appearing in the UPSC CSE interview or even clearing the UPSC exam. One of our faculties admits us with a faculty member having 10 years of experience of teaching in Delhi University. They have been thoroughly engaging in touch with their students. The major problem that we see is that their answer writing skill within the limited resources. And what I mean is like limited resources is the time, the word limits, the space limit even now. You need to present your best within the limited amount of resources that you have in your hand during those 3 hours. And this is a major problem even after having a lot of potential and caliber. Because of lack of practice, because of lack of exposure. The problem is, Yes, sir. that you start writing just before the exam. It doesn't work. It doesn't work. It will not work. You cannot suddenly become a good writer. This has to be understood very clearly. It's a long-term exercise. If you are able to, as I said, if you are able to express your thought, whatever that thought you meant comes to your mind, in writing seamlessly, you have covered more than half the distance. Problem क्या आती है? Exam pass आ रहा है इसलिए answer writing कर लिया. That won't work. So since most of you are youngsters sitting here, are not going to appear in next 2 years, so improve your writing skills. The day you are able to express yourself in writing, whatever comes to your mind, logically, fluently, you have virtually won the battle. फिर तो क्या करना है आपको? नॉलेज को स्ट्रक्चर करके वही चीज करनी जो आपको आता है. आपको तरीका तो है ही, मालूम है लिखने का. You know, you should be in a position कि I tell you a topic and you are able to speak extempore in 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. That is the level that you have to reach. Then it becomes very easy. तब आपको इतना प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी रात को 2 बजे. पहला तो मेरा सजेशन ये है कि 2 बजे मत आंसर लिखिए. जो भी लिख रहा है गलत कर रहा है. आप आंसर उसी समय लिखिए जब एग्जाम का टाइम होता है. Don't stretch yourself and do unusual things at unusual hours because the exam happens in usual hours. Get into the practice or habit of writing answers during the daytime. Don't practice answer writing in the night. That's my suggestion. Thank you, sir. You're getting the specific answers. I believe like all of you are having this experience of listening from Anil Swarup sir directly, specifically, and you see just how precise he is with his words. And this is, I think, one of the most important criteria that is required in the aspirant during the preparation time period. One question to Robin sir is that, sir, we know that during this preparation journey, the awareness of the current affairs, the happenings around the globe at the international level, at the national level, or maybe the state level is very, very important nowadays. And we see the weightage of questions coming from the current affairs or the newspapers is increasing every year, and the pattern of the questions are also changing. So, but the irony is that we have traveled across the state, we have talked to the aspirants. We see very few, I think it's 1 or 2% of the youths who are reading the newspaper nowadays. We have almost lost the habit of reading newspaper. So how important it is to read a newspaper right now in the present context when we are preparing for these exams, and how do we start developing this hobby or this habit of reading a newspaper? I had mentioned during my talk about the importance of being in touch with the world. And best method of being in touch with the world is through the newspaper. It's like reading a newspaper is like having water with your lunch or dinner. If you do not have the water, your food is not going to be pushed in properly, it will not be digested. Similarly, to keep in touch with the local issues, national issues, international issues or global issues, you have to keep in touch with the newspaper.
But there's one catch here. Simply reading the newspaper and taking the data out of newspaper is not enough. Every news has a story behind it. প্ৰত্যেকটো নিউজ যিটো ওলায় তাৰ পিছত এটা story থাকে. There is that story you must find out why. এতিয়া যিবিলাক গ্লোবেল ঘটনা হৈ আছে, যুদ্ধ হৈ আছে, ইউক্ৰেইন, ৰাছিয়া, আমাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ হৈ গ'ল. Simply knowing that an event has taken place or is taking place is not enough to prepare you for UPSC. You must know why it is happening. Critical thinking is very important along with reading the newspaper. By newspaper, I mean not just a newspaper on print, but also news that comes through portals, news that comes through the television, and news that comes through electronic media. Try to find out what is the story behind it. এটা ঘটনা কৈ দিছে নিউজ ৰিডাৰে যে আজি গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলে ইমান বম্ব পেলালে. So what is the story behind Gaza and story behind Israel? কি কেতিয়া হৈছিলে? 1948 কি হৈছিলে? Palestine কি হৈছিলে? How did Palestine come into being? How did Israel form itself as a country? এইখিনি কাম UPSC-টো এইটো নুসুধে যে ইজৰাইলত কিমান পপুলেশ্যন আছিলে, গাজাত কিমান আছিলে, কিমান মানুহ মৰিলে. No, the question will be much more critical. So you must follow up a news to is a lead. That news that you read is a lead that will give you insight into the story behind. Hey, critical thinking is very important to prepare yourself for competitive exams, particularly civil services, particularly UPSC. The question is not going to be simple. There may be a question on Lokapriya Gopinath Bordoy. He was a national leader. Why did he become a national leader? What was his forte? What did he do for Assam? What was the issue of grouping? How did it happen? How did he go and solve it? Why was it that there was stiff resistance to his proposals, and yet he could manage to talk to the national leaders and get it done? And why today we are here as an independent state of Assam instead of being a part of then Pakistan and now maybe Bangladesh? Why are these happening? You have to know the background story. So newspaper kono poriboy lagibo karon newspaper nopara mane pani nopoa nisina hobo. You have to be in touch with this because general studies paper anything can be asked, but specifically things pertaining to the national level happenings, maybe even freedom struggle or prior to freedom struggle or post freedom struggle demand ঘটনা হৈ আছে, the present, এইবোৰ গোটেইবিলাকৰ এটা লিংক আছে, সেই লিংকবিলাক জানি থ'ব লাগে. কেনেকৈ কোনে আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতক, কেনেকৈ তাৰপিছত মোগল আহিলে, কেনেকৈ ব্ৰিটিছ আহিলে. Why is it that in a country of 300 million people, Indians, 12,000 ব্ৰিটিছ সৈন্য আহি পেলাই গোটেই দেশখন ইমান বছৰ 200 বছৰ ইয়াত কেনেকৈ ৰাজত্ব চলায়? Why was it? What was behind that? So all these things you have to ask yourself. Every time you see a news, please question the news and go back to find out. As if Google ase, amar to Google on asile. Google will tell you a lot. Here background or ki asile, ki hoisile. Find out. Note it down. Keep a register. Every time you are reading something, keep a register. Horu note that likhi rakhiba. It is another matter that you will have to practice actual questions, answer writing in time. Iman minutor bitor 5 শব্দত এনেকুৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো লিখিব লাগে. Then you go back and find out whether you have covered all the issues that are relevant. Have you been able to put them properly in the proper perspective? Is it going to be an answer which is not a run-of-the-mill answer, but it has weight behind it? It has things that will make the examiner think about it. That yes, this candidate has given something which is worth reading, maybe a second time. So, you have to be different. You have to be able to say differently, same thing, differently but correctly. Like develop as you go preparing from your books. Books are not the end all and be all. Newspapers are not the end all and be all.
Every news, every item, every issue, every concept has a background. Learn that background also. Then only you will come to prepare yourself for the UPSC. Thank you, sir. Along with the importance of newspaper, we have heard from Robin sir that how important it is to read the newspaper and make notes out of it. We have seen that we are basically now getting dependent more and more on the videos or some magazines published by various institutes in their websites, which are available for free of cost. But I believe if we are not reading it by ourselves, we are not able to develop our multi-dimensional thinking process, as Anil sir and Robin sir were talking about the critical thinking approach, a multi-dimensional approach that we require for each and every topic of the syllabus. I think reading newspaper on the same topic every day, the editorials, the experts, the opinions that they are putting forward in the form of way forward or in the solutions of each and every dimension of various issues. It is important to read the newspaper. But now, I would like to hear from Ritwik sir that how is the environment at Guwahati University among the students, whether they are having this habit of reading newspaper or not, and if not, what are we doing in the university campus, and can we think of opening up a newspaper club maybe at the university level, and if we are opening up a newspaper club, why not we arrange, Robin sir is one of the most famous quiz masters